This is how I have to go. Don't say bichu or snake here. I must run now. Looks like we are in the land of waterfalls. Hello everyone, what is happening? So it's the day 2 of mine in this beautiful village called Bhangdwara, and if you haven't seen the first episode, then go check this video out. And right now I'm on this empty road, and those guys, localites, Ayush, Sagar and Aryan, they guys are already ahead of me and they are taking me to somewhere. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के एक वाटरफॉल है. There is a small waterfall और हम उसको अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो हम रास्ते से थोड़ा सा आगे ही आए थे and we saw this cave over there. I don't know if you can see it properly, but there is a cave up there and this is the way to that cave. और we are going to explore this. तो देखते हैं क्या है अंदर. तो these guys are saying कि यहाँ से केव में जाने का तेरा आइडिया था तो तू आगे चल. I am risking my life here, so let's see what I am going to find. And they are behind me. यार तू तो आगे आ जा कम से कम. Sagar is, Sagar is a brave boy. झाड़ियों से जाना पड़ रहा है. Is it safe here? Sagar boy. Sagar is already ahead and he is saying कि केव खतरनाक है. तो let's see कितनी खतरनाक है. Holy, 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 holy. Oh, so this is a giant cave here. This is amazing. Are you guys coming inside? Come slowly, right? Wait. So this is the thing right here. You can see it is a big one. And it looks like कि यहाँ पर खुदाई वगैरह हुई होगी. हो सकता है कि यहाँ से stones वगैरह collect करे हों जब कहीं पे construction चल रहा हो. So this cave is pretty deep. And there is the end. I don't think कि हम इससे आगे जाएंगे. And before I fall from here, we must go towards the waterfall. So let's go there. What? Bichu? Don't say bichu or snake here. Some villagers over here. So here's this thing. And they were challenging me कि यहाँ से नीचे देख के दिखा. So we have bunch of pine trees over here. I think I'm gonna go explore this area. This one right here at the bottom here. So those trees I was talking about. अब मैं वहाँ पर आ चुका हूँ. These are those pine trees. यहाँ से यहाँ तक सब pine trees हैं. I'm standing up over this and this is beautiful. And before that we were at that road और उससे पार होके उस पर चल के हम यहाँ पर आ चुके हैं. अभी हमें आगे एक विलेज में जाना है. That village is called पतड़ी. पतरी क्या नाम है? पतरी विलेज का नाम. ओके पतड़ी पटूड़ी. तो अभी हमें उस विलेज में जाना है जहाँ से वाटरफॉल का रास्ता शुरू होगा. That village is called Patudi, if I'm pronouncing it correctly. Anyways, so we are about to reach the Patudi Gaon or the Patudi village. It is right in front of me over there, and there is a temple at the top. और वहीं से इनका कहना है कि वहीं से हमें वाटरफॉल दिखेगा. और कम से कम 1-1.5 घंटा या 2 घंटे हो सकता है हमें और लगे. आई थिंक दिस इज़ द वे. यही है क्या रास्ता? ओके, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द पटूड़ी विलेज.
some local shops over here. So we are moving inside the Patodi village. These are some local things over here happening. Some people are already watching me from the top. There, guy. Wow. Every village is amazing here. We found a cabin kind of thing here. Oh, look at this rooftop here. तो काफ़ी देर से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं and those guys said कि अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ है. But anyways, I'm hoping only one thing here कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, the place, that waterfall, it should be worth going to. I mean, this effort of climbing this mountain to the top should pay off. The place is looking amazing already. I mean, this thing is adventurous. Moving through bushes. Oh. You can see where I'm moving. Down there you can see the entire road we were walking at, and one wrong step here will take me back to the beginning, और वहाँ से फिर मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और हो सकता है उस टाइम मैं शुरू करने की हालत में भी ना हूँ. Anyways, this is how I have to go. Those guys are lost. I must run now. Water is flowing through this small canal. The speed of this water, it's flowing with very fast speed. तो waterfall तो I think यहाँ पर है. Those guys are here. Oh, and as I mentioned कि इस पानी की स्पीड को देखकर मैं इतना तो श्योर हो गया था कि वाटरफॉल यहाँ पर है. एंड आई थिंक साउंड से आप भी श्योर हो गए हैं कि दैट आई एम क्लोज टू द वाटरफॉल. ओहो, वी आर फाइनली एट द फॉल. अमेजिंग. दिस इज द प्लेस गाइज, दिस इज द प्लेस. दिस इज व्हाट वी वर मूविंग टुवर्ड्स. एंड रास्ता ऊपर भी जा रहा है. आई डोंट नो कि ऊपर क्या है, बट दिस थिंग ओवर हियर इट्स ब्यूटीफुल. तो एज आई वाज वंडरिंग कि ऊपर क्या होगा, सागर इज सेइंग कि ऊपर इससे भी बड़ा एक वाटरफॉल है, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट नाउ. मतलब पानी जो है वो रास्ते में भी बह रहा है, बिकॉज द वाटरफॉल इज़ क्वाइट बिगर. तो मुझे आराम से चलना पड़ेगा. मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं नीचे. ओहो, अनदर वन. Looks like we are in the land of waterfalls. This place is amazing.
here comes the sunlight. तो वाटरफॉल से ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक देयर इज़ अ स्मॉल टेम्पल और वहीं से वाटरफॉल फॉर्म हो रहा है. लेट्स गो एंड सी दैट. यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं एंड दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ दोज वाटरफॉल्स. यहाँ से पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता है एंड दोज वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड विद दिस वाटर. यहाँ से हम लोग आए थे नीचे से और वहाँ से मंदिर का रास्ता है. तो टेंपल का रास्ता जो है नीचे से ऊपर चला जाता है सामने से. तो नाउ वी आर गोइंग टू दैट टेंपल एंड दैट टेंपल इज़ कॉल्ड केदार देवता. केदार देवता का वो मंदिर है. तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट एज वेल. So this butterfly over my hand right here, you can see, looks like we are friends now and she likes me. Another one also came here. She's flying. Oh my god. One is right over my hand and another one is over my camera. So these butterflies looks like they like me again and they are not letting me go. So now I am going to the Kedar Devta temple and that butterfly just flew away somewhere. Looks like she didn't like our friendship being revealed to you guys. I should have kept it private. Anyways, let's go to the temple. And the scenery, the view from here is just insane. Just look at those mountains over me. Oh, damn. This place, literally, this is the best place of this village area. It looks like I am in Kashmir. I mean, look at these pine trees. Looks like I am in Kashmir. I mean, beyond words, it's amazing. So behind me is the temple over here. We are just few steps behind. Let's go and see that. So this camera will shut at any time, but मैं फिर भी vlog कर रहा हूँ और हो सकता है all of a sudden ये कैमरा बंद हो जाए तो अपने आप समझ जाना. I'm in the temple now and here are the bells. View there again, the entire Teri lake is over there behind me and that is the road we were walking at. And this place again, it's amazing. I mean, the way that leads to this place, that was beautiful. And here I am in this beautiful district called Tiri in Uttarakhand, if you don't know already. And if you are new and if you haven't watched my previous episodes of this village, then I suggest you, I don't suggest you, you can just go and check them out. And to see my coming ones, consider subscribing. This was Harsh Gupta and I will see you in the next one.